Hi everyone, this is Professor Sohan Acharya Sohan. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and please hit the like button if you like this one. So कल के हमारे लाइव के अंदर हमने जो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट दैट इज कुर्ग। बड़ी छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 to 10 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। आई रिक्वेस्ट कि we will study from examination point of view. We are not going to waste too much time. We have to just understand the crux of the chapter. Then crux in the sense of what is the story it's all about. Then what are the major quotes? Is there and something else? What is the theme of the chapter? Then few important terms which are used in this chapter. Then after then whole which kind of question may be asked into your final examination. Fine. So today I'll be talking simultaneously using the two languages. The because maximum of the students were not able to understand the way I tried to deliver the first class. They said it went from our head. So to make it easy for the students, let's use the bilingual method. Bilingual in the sense of first English, then translate it into Hindi. So part two, glimpses of India, and its name as Coorg. It's a Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. So these are the three things जिसके लिए कुर्ग जाना जाता है. Then midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have been drifted from Kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. So with the opening of the chapter, राइटर हमें बताता है कि कुर्ग जो है वो कहाँ पर है बेसिकली इन बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और उसको कंपेयर करता है पीस ऑफ हेवन के साथ जो कि किंगडम ऑफ गॉड से ड्राइव किया गया है. देन आगे राइटर लिखता है hills is rolling hills is inhabited by the proud trees and the Coorg is also known for martial men, beautiful women and wild creature. तीनों के तीनों points. Then Coorg or Kodgu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, then spice and coffee plantation. Evergreen rainforest cover 30% of this district. ये फैक्ट आपको याद रखना है. मीन्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है पूरे कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का 30% कवर करता है. ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे. बहुत सारे विजिटर मॉनसून के टाइम पे वहाँ विजिट नहीं करते. द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continues till March. So the best time to visit this place is from September to March. The weather is perfect with some showers thrown in good measure. The air breaths of invigorator coffee estate and colonial bungalow stand tucked under the canopies of Time Corner. उस प्रीवियस हिस्टोरिकल रेफरेंस यहाँ पर राइटर ने दी है कि कुर्ग हैज इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसका अपना महत्व है एंड कॉफी स्टेट्स के बारे में पर्टिकुलरली ये जानी जाती है. देन अगेन रिपीटिंग द सेम लाइंस व्हिच द राइटर मेंशन इनटू द opening para. And then he said the beautiful bungalow of British time that is also you can see over there. After then, the writer says the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arab descendant. So जो वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ के नागरिक हैं, वो बेसिकली ग्रीक से हैं एंड अरबिक डिसेंट के अंदर हैं. As one story goes, apart from Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. So Alexander the Great, आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा. That also has historical connectivity this place. उसकी जो आर्मी है वो साउथ कोस्ट के साथ वहाँ पर सेटल हो गई थी. Then these people married amongst the local and their culture is apparent in martial tradition. Marriage
एंड रिलीजियस राइट्स। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन्स कुर्ग इज नोन फॉर मार्शल ट्रेडिशंस, मार्शल आर्ट्स दैट इज फेमस इन आवर कंट्री, जो चाइना के अंदर भी इम्पोर्ट हो चुकी है, दैट इज बेसिकली known from historical point of view and Indian heritage, kung fu जिसको हम बोलते हैं, that is a martial art given by our ancestors. Then second one is the marriage and the religious rites, which are distinct from Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from long black coat. Now the writer is talking about the appearance, which kind of appearance people used to prefer in Coorg, with the embodied waist belt worn by the Kudwis. It resembled the kufiya worn by the Arabs and Kurds. Kurds. Kurgi home have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Coorg Regiment is one of the most decorated in Indian Army. The first chief of Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. So you can see the importance and the valor of Kurg people and their contribution to our country, particularly to the Indian Army also. जो हमारे फर्स्ट चीफ जनरल थे आर्मी के, वो एक कुर्गी थे, मीन्स कुर्ग से बिलोंग करते थे. Then even now, Kodwas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. उन लोगों के पास आज भी परमिशन है कि वो अपने जो फायर आर्म्स मीन्स जो भी वेपन्स वगैरह हैं सिंपली फॉर देयर डिफेंस वो कैरी करके चल सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस. So the river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg, Mahasir and Ahasser. A large freshwater fish abound in these waters. Then kingfisher dive for their catch, while squirrel and the langur drove partially eaten fruit for the mischief of enjoyment, the splash and ripple effect of the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. सो ये थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन बताई है कि कुर्ग के अंदर जो और क्या क्या चीज़ें हैं, like because river Kaveri means move from over there, hills and forest of that particular area are very important, fresh water due to these things. वहाँ पर kingfishers जो हैं वो dive करते हैं and squirrel and langur drop partially eaten fruits for the mischief of enjoyment and splash and the ripple effects of clear water. ये सारा का सारा एक ये मान करके चलो फॉरेस्ट एरिया की तरफ इशारा करता है. देन एलिफेंट्स ऑल्सो, एलिफेंट्स जो हैं वो अपना एंजॉय करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर. देन द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकेम कन्वर्ट्स टू देयर लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स with river rafting. River rafting is also one of the important thing which we need to understand for cookies. Then canopies, hiking, rope climbing, and mountaineering. Biking, numerous walking trails in the region are a favorite with trekkers. ये भी एक important sports event है वहाँ के. Then birds, bees, and butterflies are there to give you company. So these are the things, natural scenario of that place. Macaws, Malabar squirrels, langur, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopies. I do, however, prefer to step aside for wild elephant. अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम पूरे चैप्टर में जो राइटर है वो अपने आप को कोट करता है. The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge and leads to the 64-acre island of Nisar Dham. Then running into Buddhist monk India's largest Tibetan settlement at nearby Lekopa is a bonus. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for heart
and the soul of India, right here in Coorg. सो ये चैप्टर है, इसमें पर्टिकुलरली कुर्ग के बारे में, उसकी ज्योग्राफिकल डिटेल्स के बारे में बताया गया है. सो इट्स वेरी सिंपल, नॉट सो मच डिफिकल्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है. सो ये जो 3 यूनिट्स हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की, जो प्रेस्क्राइब की गई हैं इस बुक के अंदर, इसमें बेसिकली राइटर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है. एंड द बुक वाज रिटन अप्रॉक्सीमेट, मींस अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 years बैक. एंड आज जो है वो अपडेट हो चुका है. मींस राइटर वांटेड टू शो बाय दिस चैप्टर द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. वन इज, जैसे हमने फर्स्ट में बात की बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग है, थर्ड जो हमारा कल जिसकी हम बात करेंगे वो टी फ्रॉम आसाम है. सो बेसिकली what is the basic agenda of the writer, what they want to, he want to show by these 3 units. वो सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि वैरायटी ऑफ इंडिया, वैरायटी ऑफ द people of our country, and variety of the living standard, variety of the wildlife, whole in one chapter. That is all what the writer wants. Then prime is here and beast. Then mainstream a word, term है, इसको अच्छे से याद रख लेना. A traditional which most people follow. Then tales of valor means story of courage and bravery, and usually in war. The tales of valor बोलते हैं. Then most decorated, having, it means having received the maximum number of awards for bravery in the war. Then laid back means relaxed, not in a hurry, जल्दबाजी में नहीं. Then rafting होता है then traveling in a river in a raft, a floating platform made by types of planks together. Then canoeing, it means traveling into a river again in a canoe, a large narrow boat. Then rippling, it means going down a cliff by sliding down to a rock. Then another page is trails, Trails. It means paths created by walking. Then panoramic view, ये बड़ा अच्छा एक phrase है. A view of the wide area of land. तो ये कुछ एक फैक्ट हैं जिसमें कुछ एक फ्रेज हैं जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. So it was all in all about this chapter. There are few questions which are being asked like where is Coorg? So Coorg is placed, वो स्टार्टिंग में जब आया था फर्स्ट पैसेज के अंदर इसका आंसर था. देन व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोर्गूज पीपल डिसेंडेंट, दे आर द डिसेंडेंट ऑफ, मैंने देखा था कि मीन्स अरब पीपल, ये क्लियरली मेंशन था. देन व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स यू नो अबाउट, क्या क्या है द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग पीपल्स की हिस्ट्री. देन मेन क्रॉप ऑफ द कुर्ग, क्या थी उनकी मेन क्रॉप कुर्ग की, हमने आई थिंक सेकंड पैसेज में आया था, कॉफीज के लिए वो जाना जाता है प्लेस. देन द स्पोर्ट्स इट ऑफर टू द टूरिस्ट के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स, राफ्टिंग, बाइकिंग, all sports were being used. The animals you are likely to see into the group, there were so many animals, but particularly उन्होंने बात की है elephant की, right? Then its distance from Bangalore and how to get there. कर्नाटका टू बेंगलोर में जितना डिस्टेंस लगता है वो स्टार्टिंग पैसेज में आया था. Then here are, I mean, this is something which you would be asked in your exams. Nothing from a mass revision. So that's why in a very short period of time, hardly in 15 to 20 minutes, you would be able to describe the crux and whole chapter objectives. Fine. As I mentioned in the previous class also that YouTube पर बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी डेकोरेटिव वे में या फिर और तरीके, your choice, that is also good. But here in this class, in this way, I think a student must be able to express himself or herself in this way. It helps you a lot. Right? So tomorrow again we shall be talking about the next part in detail and all those things. So if you have any query regarding this chapter, you can send, you can write in the comment section, and don't forget to share this video and don't forget to like if you like it. Thank you so much.